Morning children, let's start our new topic, measurement of an angle. So children, in our previous chapter we had studied about how an angle is formed, what is an angle. Okay, so children, you know how an angle is formed when two rays or when two line segments meet at a point. Okay, so now measurement of an angle, how we measure of an angle. So the size, magnitude or measures of an angle is the amount by which one of the arm needs to be rotated about the vertex so that it lies on the top of the other arm. So in the figure, angle 1 is greater than angle 2. See, this is children angle 1 and this is angle 2. So see, angle 1 is greater than angle 2. Okay, now we find the measurement of an angle. Okay, with the help of protractor. ठीक है, so I have explained with the help of a clock. आपको मैं measurement of angle बताऊंगी clock से किस तरीके से measure किया जाता है. So see children, this is a clock. Okay, this is the hand of a clock. Okay, see, this is the hand of a clock. The time is, this is 12, this is 3, 6 and 9. Okay, देखो 12 है, then यहाँ पे क्या होता है children, this is 3, okay, this is 6 and this is 9. Okay, then see children, the clock moves always clockwise. ठीक है, ये जो clock होती है इस movement को क्या कहते हैं children? See the movement of a clock, the clock always move clockwise. ठीक है, opposite of clockwise is anti-clockwise. Okay, if the hour hand clock moves from 12 to 3, okay, this is 1/4 turn. And 1/4 turn means this is a quarter turn. 1/4 means one right angle is formed. See here, one right angle is formed. Okay, if the hour hand moves from 12 to 6, if it moves from see it is a half turn move. Okay, 12 to 6 में क्या हो रहा है, ये half turn move कर रही है. It means half turn means 180 degree. ओके, देखो 12 से 3 में ये 1/4 टर्न कर रहा है, इट इज़ 90 डिग्री. व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 12 to 6 इट मीन्स हाफ टर्न, और हाफ टर्न मीन्स क्या होता है चिल्ड्रन, 2 राइट एंगल. 2 राइट एंगल मीन्स 180 डिग्री. ओके, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 12 to 9, अगर ये 12 से 9 में मूव कर रही है इट मीन्स इट मूव्स 3/4 टर्न, और 3/4 टर्न मीन्स 270 डिग्री. ओके, देखो 1/4 टर्न इज़ 90 डिग्री, half turn means 180 degree, and 3/4 turn is the 3 right angle, and 3 right angle means देखो 3 into 90, 3 9s are 27, 270 degree. Okay, so when our hand moves from 12 to 9 it turns 3/4. Okay, and 3/4 turns means its value is 270 degree. Okay, when the hand moves from 12 to 12, अगर ये clockwise में इस तरीके से मूव करके फिर से ये 12 पे आ रही है, it means 1 complete turn, and 1 complete turn equal to 360 degree. 360 degree means children 4 right angle. Is it clear? देखो ये कितना टर्न है चिल्ड्रन, 12 से 3 के बीच में कितना टर्न है, 1/4 टर्न. 1/4 टर्न मीन्स कितना डिग्री है, 90 डिग्री. 12 से 6 के उसमें आ रही है, when it moves from 12 to 6 it means 1/4 टर्न प्लस 1/4 टर्न मीन्स हाफ टर्न. ठीक है, ये कितना टर्न होता है, दिस इज हाफ टर्न. हाफ टर्न का मतलब क्या होता है, 1 स्ट्रेट एंगल. ठीक है, 1 स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री, 1 स्ट्रेट एंगल. व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 12 to 9, अब ये 12 से 9 के बीच में यहाँ पे आ रही है, इट मीन्स दिस इज कितना, दिस इज 1/4 टर्न प्लस 1/4 टर्न प्लस 1/4 टर्न, इट मीन्स 3 टर्न, इट मीन्स 3/4 टर्न, और 3/4 टर्न मीन्स 270 डिग्री. इट इज़ कॉल्ड एन रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, सी चिल्ड्रन, दिस इज़ राइट एंगल. ठीक है, जब 12 से 3 के बीच में टर्न करेगा तो दिस इज़ क्वार्टर टर्न मीन्स राइट एंगल 90 डिग्री. ठीक है, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 12 to 6 इट इज़ हाफ टर्न मीन्स स्ट्रेट एंगल. व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 12 to 9 इट मीन्स 270 degree, or 270 degree means reflex angle. 270 degree is called reflex angle. Reflex angle means more than 180 degree. Okay, but less than 360 degree. And when it turns from 12 to 12 it means 1 complete turn, and 1 complete turn equal to 360 degree. Is it clear children?
समझ आ गया ना कैसे करके करना है. देखो 1 complete turn is 360 degree, half turn means straight angle 180 degree, quarter turn means 1/4 90 degree, 3/4 turn means 3/4 270 degree. Okay, then see. Children, I have explained one example. देखो, what fraction of a clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through when it moves from 12 to 6? See children, this is 12 and this is 6. So when the hour hand moves from 12 to 6, it means the fraction of revolution is half. Okay, जब ये 12 से 6 में आ रही है, ये 12 है, this is 12 and this is 6. So it turns, कितना revolution लिया इसने? It is half revolution. Half revolution means 1/2 and number of right angles is, देखो इसमें कितने right angles हो रहे हैं यहाँ पे? 12 to 3, 1 right angle, 12 to 6, 2 right angle. So it means 2 right angle. 2 right angle is formed. ओके, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 6 to 9. अब इधर देखो 6 to 9, इट मीन्स फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन टर्न इज 1/4. 6 से 9 के बीच का रिवॉल्यूशन कितना है? 1/4 एंड नंबर ऑफ राइट एंगल इज 1. ओके, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 1 to 10. 1 to 10 चिल्ड्रन, सी दिस इज 1 एंड दिस इज 10. ओके, अब ये 1 से लेके पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा मूव करेगी. ओके, देखो 1 से लेके यहाँ पे मूव करने का मतलब है फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन टर्न इज 3/4 एंड नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न इक्वल टू 3. ओके, देन सी चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एंगल्स. नाउ टाइप्स ऑफ एंगल. An angle whose measure lies between 0 and 90 degree is called an acute angle. So children, acute angle means less than 90 degree. So all angles less than 90 degree is called an acute angle. Okay. Right angle means an angle whose measures 90 degree is called a right angle and it is a quarter turn. Okay, right angle means whose measure is 90 degree. Okay, and it is a quarter turn. Quarter turn means 1/4. Obtuse angle means an angle whose measure lies between 90 and 120 degree. Okay, obtuse angle more than 90 degree but less than 180 degree. 180 degree means straight angle. Okay, so obtuse angle, they are lies between 90 and 120 degree. So this is an obtuse angle. Then straight angle. Straight angle means an angle whose measure is 180 degree, exact 180 degree. Okay, is called a straight angle. See children, this is a straight angle whose measure is 180 degree. Then reflex angle. This is the reflex angle. ये जो angle form हो रहा है. Okay, तो an angle whose measure lies between 180 degree and 360 degree is called a reflex angle. So reflex angle more than 180 degree but less than 360 degree. Clear children? So this is about how to measure an angle.